मास्टर्स टुर्नामेंट वो स्टार्ट करतात. तेणी फर्स्ट टायम गोंयांत करता आनी फर्स्ट टायम करतात. ताका लागून बाकी इंडोर पर्रिकर स्टेडियमाचेर स्टार्ट जाता टुर्नामेंट फाल्यांच्यान 2 तारखेच्यान. फाल्यां 6:30 सुमार सकाळ 6:30 स्टार्ट जाता सकाळचो. इवनिंग अप टू 10 o'clock सुमार वता 9:30 to 10 o'clock वतलो आनी हो 5 तारखेक तेजें क्लोजींग फंक्शन आसतलें. 45 टिम्स आतां आयिल्ले आसात गोंयाक आयिल्ले आसा मडगांव आयिल्ले हॉटेलान रावतात त्यो तेजे ओन एक्सपेंडिचराचेर ते रावतात. एक कोणेय स्पॉन्सरशी हें तशें कांय ना. ते ओन एक्सपेंडिचर करून येतात म्हणजे तांकां बास्केटबॉलाक कितले मोग आसा हें कळटा की ते बास्केटबॉल खेळपाक आनी ते थोडे इंटरनॅशनल प्लेयर आसा तितून नेशनल इंटरनॅशनल प्लेयर आसा सिनियर प्लेयर आसा. स्पोर्ट्स इज ऑर्गेनाइजिंग द फर्स्ट लेजेंड्स कप. तो ये टूर्नामेंट जो है ये टूर्नामेंट है एक मास्टर्स लेवल ऑल इंडिया मतलब एक नेशनल लेवल मास्टर्स टूर्नामेंट है जो 30 years एज के अबव प्लेयर्स आते हैं राइट. सो एज 30 to 60 प्लस ये होता है मास्टर्स कैटेगरी राइट. सो ऑल द लेजेंड्स हु हैव प्लेड फॉर इंडिया who had played for nationals, who had played for their state, for college, for their universities, at every level they have played, they will all be participating in this. So अभी इस फॉर्मेट में जो का फर्स्ट फॉर्मेट है लेजेंड्स कप, दिस विल बी स्टार्टिंग फॉर 30 to 55 प्लस एज कैटेगरी राइट अक्रॉस ऑल. सो ये पहली बार है कि हम लोगों ने पूरे इंडिया के सारे जोन्स को कवर किया है. एवरी प्लेयर दे हैव अ ओन टीम और पूरी की पूरी टीम हमारे साथ पार्टिसिपेट करेगी. तो वी हैव अबाउट 45 टीम विथ 450 पार्टिसिपेंट्स मतलब 450 ऑल सीनियर प्लेयर्स हु विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द टूर्नामेंट फॉर 4 days. एंड द टूर्नामेंट फॉर्मेट इज़ अ लीग फॉर्मेट ताकि सब टीम को एटलीस्ट 2 मैचेस या 3 मैचेस का मौका मिले इन अ लीग एंड देन इट विल बी अ नॉकआउट. सुपर लीग मतलब बारी बारी एक दूसरे के साथ खेले या फिर अ सेमीज एंड अ फाइनल्स फॉर्मेट. So everybody by end of 5th will actually have an amazing to see how basketball is grown from last 20 years 10 years to today. And I think it's a very important platform for our younger generation to know that how basketball was played before and what techniques and what format and how actually a player should have in terms of discipline, grit and constant motivation. Because आज की generation में we want to inspire players to have that constant discipline and motivation because inspiration is a one time thing, but to be disciplined every single day and continuously play without anybody giving you a backup, that is what we want to prove by having a senior players play at this age as well. So I think that's the platform we as Yashas Sports want to create. Our tournament will start morning 7 a.m. and it will end till 9 o'clock. 9 o'clock in the पब्लिक के AM. लिए चार्जेस रहेगा या फ्री ऑफ कॉस्ट? It's a free entry. Everybody, in fact, we want everyone who are fans and everybody to come and see because the matches will run back to back. And every category, both men and women, and it's a free entry, open for all, at Manohar Parrikar Stadium. There are actually 2 Goa's men team participating in a 30 and a 40 category. करीबन 7 कैटेगरीज है उसमें 30 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 40 तो उसमें सारे के सारे मोस्टली इंटरनेशनल प्लेयर ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं. मोस्टली जो लेजेंडरी रहे हैं जो रिटायर हो गए हैं तो 40 प्लस 45 प्लस. तो इसमें बेसिकली हमें नाम तो याद नहीं है बट जैसे दिलीप भाई जो ओलंपियन हैं वो खेल रहे हैं. जिम्मी भाई जो है हमारे जिम्मी धारीवाल है वो इंटरनेशनल प्लेयर है. वो काफ़ी कंट्री के लिए काफ़ी सर्विस दी है उन्होंने और बहुत टाइम तक उन्होंने कंट्री के लिए खेला. जिम्मी भाई हो गए हैं, दारा भाई हो गए हैं. तो मोस्टली तमिलनाडु से और केरला से भी काफ़ी लेजेंडरी प्लेयर्स है बट ऑनेस्टली अभी बिना देखे मैं नाम नहीं बता सकता कि ये पार्टिसिपेट कर रहे कि नहीं कर रहे. We also would like to thank Goa Basketball Association, because when we thought Goa and to have an indoor ground, because every city in our country has the indoor ground, but what we felt was like when we talk about Goa, it's all about cultural heritage, it's all about people coming together and also to give them that platform of basketball. That's the reason we chose Goa, and we would really like to continue it to happen annually at Goa as well, considering that we get a lot of younger generations to come. So Goa Basketball Association say, and then we would also like to thank Mahesh sir, who's been Special also thanks together to with Mahesh us sir, because for the last Mahesh sir 1.5 के बिना हम months. लोग यहाँ कुछ भी नहीं. Yeah. महेश सर ने
So along First with day sir, से हमारे till now. MLA जी, हाँ, and then both President and Secretary of Goa Basketball Association will be present tomorrow. Actually government का इसमें कुछ इतना नहीं ground है. acquire We करने के लिए. have the Sports Authority of Goa actually provide us the ground on a particular fee charges for the 4 days. जो, हाँ, वो We pay booked play the वाला. ground So in thanks advance. to Goa So we government can also. use the facilities, and it would be really great for us if in future we can actually continue and maintain the format of the infrastructure, so many people can actually double it out. Not only one indoor court, but we can actually make sure that there are multiple indoor courts in future, so that games like national games, in future coming Asia Cups, like all those can also become part of Goa, right? Not only just a state or a national level competition.